Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be talking about being and becoming, and in this process, you will also explore your potential. There is a saying of Hazrat Ali, when nails grow long, then nails are cut and not the fingers. Similarly, when doubts crop up in relationships, then doubts and misgivings have to be cut, not the relationship. So, being and becoming is all about man's potential for growth. Being is the attitude, and becoming is the net result of that attitude, which surfaces in the form of behavior and action. Being is the gift that you have received. What you make of this gift is your becoming. अल्लाह ताला ने हमें वजूद दिया है, अब उसका क्या हम बनाते हैं वो हमारे ऊपर है. In other words, you are the architect of your fate. यानी हम अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर रहे हैं. Remember, principles are important, for they are the universal laws of Allah. Persons do not matter. When people abide by principles, they become renowned personalities. When principles are ignored, the result is that the individual becomes a non entity. The soul has come to the body and the body to life for the purpose of evolution. We are evolving, we are constantly in that process of becoming, and we are using our relationships with everything to decide what we are becoming. So, relationships are very important, and that is why I have given this quote of Hazrat Ali Islam, that when there is a misunderstanding, the misunderstandings and doubts have to be cut, but the relationships do not have to be cut. We have been set to this relative world so that we know and experience who we really are. We are what we create ourselves to be in our relationships with others. So, relationships define us. Our personal relationships, thus, are holy ground on which we tread to make ourselves what we wish to become. Relationship is not just doing, but being, and being is an attitude. It stays with each passing moment. Doing is an activity of the mind, being is an activity of the soul. When you are in love with someone, then this is a state of being. It is an attitude and it sanctifies your being. यानी आपके पूरे वजूद को मुकद्दस बना देता है ये attitude of love. So a right attitude is very important. For if it is faulty, then instead of making, it will lead to your unmaking. Of all the relationships, the most important relationship is the relationship with one's creator. So हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है. अमजद इस्लाम अमजद का ये शेर है. The statement of my life's account minus you is all loss. All other relationships teach you to develop those values needed for this highest and noblest relationship. Now, sometimes we get disillusioned by the behavior of people around us. And here we must remember this quotation given by Mother Teresa. People are often unreasonable and self centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway. And then she concludes in a very beautiful way. For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. तो ये तो ताल्लुक अल्लाह के लिए ताला के साथ है. तो आप अल्लाह ताला की खातिर लोगों से दोस्ती रखें, अल्लाह ताला की खातिर लोगों से दुश्मनी रखें. अल्लाह ताला को ही सबसे अपनी जिंदगी का महफिल बनाएं. अच्छा, अब जिस वक्त हम चल पड़ते हैं जिंदगी के सफर पे, तो हमें काफी मुश्किलात भी आती हैं. Struggle often baffled, sore baffled, down as into entire wreck. Yet struggle never ended, ever with tears, repentance, true, unconquerable purpose began anew. Poor human nature, is it not a man's walking in truth always that a succession of faults? तो ये कार्लाइल की कोटेशन है.
कि इंसान का ये जो सफर है खुदा की तरफ या रिलेशनशिप्स की तरफ, इसमें बहुत सारे रुकावटें भी आती हैं और बहुत दफे इंसान गिरता है. Man can do no other. In this wild element of a life, he has to struggle onwards. Now fallen deep, abased, and ever with tears, repentance, with bleeding heart, he has to rise again. Struggle again, again, still onwards. That his struggle be a faithful, unconquerable one. That is the question of questions. So लाजमी ये है कि कोशिश जो है वो इंसान करता रहे, क्योंकि कोशिश के बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती. और कुरान की आयत है, Allah is with those who strive in his way. And do not give up effort nor despair, for indeed you will be successful if you are a true believer. तो इसी ख्याल को एक शायर ने, जिनका नाम है औरंगजेब हफी, उनने इसी ख्याल को आगे पेश किया. मैं हजार बार डूबा, मैं हजार बार उबरा, मुझे पार खींच लाया तेरा दस्ते गायबाना. मैं संभल संभल के फिसला, मैं फिसल फिसल के संभला, मेरे साथ साथ आई तेरी निगाह मुशफिकाना. तेरे नूर सिद्ध के हक की वो अजब सी किरण थी कि बना दिया है जिसने मेरा दिल चरा खाना. मेरे दर्द की दवा की मुझे जिंदगी अता की, जहे खूह दिल नवाजी, जहे तर्ज दिल रुबाना, दिल बराना, सॉरी. तो ये अल्लाह ताला के हुजूर वो पेश कर रहे हैं कि जी मैं तो गिरता रहता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं तो फिसलता रहता हूँ. आप ही हैं जो मेरी तरफ दस्ते शफकत बढ़ाते हैं और मुझे गिरते हुए को थाम लेते हैं. तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे दिया है. Thank you thousand times every time you came to my rescue. Your invisible hand saved me from drowning. I slipped again and again. Your kind gaze accompanied me. The light of your truth illumined my path and gave light to my heart. You relieved me of the distress of my heart and gave me life. How can I ever thank you for your kindness and mercy? And then we find a more sterner and a more robust tone in what has been described by Alfred Lord Tennyson, Lord Alfred Tennyson. And these are lines from Ulysses. Ulysses, who was a warrior, who was a king, who was always in search of adventure. Now, once he has returned back to his country, to his land, he is again restless. He wants to go out in search of another adventure. So these are lines from the poem Ulysses. How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अब वो चमक दमक नहीं रही मुझ में यार, मैं एक तलवार की मानंद हूँ जिसको जंगाल लग गया. डेथ क्लोजेज ऑल बट नथिंग एट द एंड. डेथ आ जाएगी तो सब काम खत्म हो जाएंगे, मगर मरने से पहले some work of noble note may yet be done. मरने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा काम तो बंदा कर ले. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. जब हम जवान नौजवान थे तो हमारे में बड़ी ताकत और कुवत थी, अब हमारे में वो ताकत और कुवत नहीं रही. One equal temper of heroic hearts made weak by time and fate. अब वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म ढल गए हैं, अब हमारे में वो ताकत और सकत नहीं रही. बट स्ट्रॉन्ग इन विल, मगर अभी भी हमारा इरादा जो है वो मजबूत है. टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. तो हम जस्तजू में चलेंगे, हम तलाश करेंगे और पा लेंगे हकीकत को, और हार नहीं मानेंगे. तो इसमें मुझे अपने वालिद का एक किस्सा याद आ जाता है. वो जब बहुत बीमार थे और बहुत अलील थे और अपना उठ नहीं सकते थे बिस्तर से, तो वो अक्सर जो उनके साथ उनको मिलने आते थे तो वो कहते होते थे कि अब तो उठता ही नहीं अपने जिस्म का मलबा, कभी कांधा दिया करते थे कोसारों को. Now I cannot even raise the debris of my body. There was a time when I used to lend support to mountains. तो इंसान कमजोर है, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए हर वक्त. जस्तजू करने खुदा के लिए निकलें या अल्लाह के रास्ते पे चलने निकले तो इरादे की मजबूती जो है ये बड़ी ज़रूरी है. फिर हिम्मत भी चाहिए, फिर इल्म और दानाई भी चाहिए, और फिर जब गिरे तो फिर भी अल्लाह को पुकारे मदद के लिए. और ये अमजद इस्लाम अमजद का शेर है, ये बड़ा खूबसूरत है. दिल को हिसारे रंज और अलम से निकाल भी, कब से बिखर रहा हूँ मुझे अब संभाल भी. टेक मी आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ ग्रीफ एंड मिजरी, stop me from disintegrating, make me whole. Thank you very much. God bless you.